Dear students, so we will start with the salt experiment. So this is very vital experiment. So before going to the introduction of this, we have to know what is a salt. So generally, salt is salt. You know, generally three salts are there: single salt, double salt, and complex salt. Double salt ma'am have told the practical first, crystallization practical, complex salt no need. We are going for single salt. तो अब हम देखिए single salt कौन हो? Okay. तो salt generally, just example, good example नवा NaCl. So NaCl is a salt. If I will simply break this in aqueous solution, मतलब water देकी जदि मु ताको dissociate करूची, you are getting what? Na plus Cl minus. तो generally Na plus Cl minus. तो गोटे तुम्हें कौन पाइलो? Positive cation पाइलो. This is cation, and this you are getting as anion. And a cation को हमें कहूँ basic radical. We are calling this which radical? Basic radical. Anion we are calling this acid radical. So in your syllabus, this acid radical experiment is not there. We have to only find out the basic radical. So to find out this, we have to follow some methods. So the first one is very simple, preliminary observation. So in preliminary observation, we have to see whether the salt is colorless or colored. So maximum cases we are taking the colorless salt. Second, we have to see the structure, crystalline or amorphous. Very simple. Take the salt, rub with your hand, or take in your hand. हाथरे नियो ताको रब करो, हाथरे नियो ताको रब करो. रब कले तुमको जदि means crystalline crystal भलिया लागुची, that means that is a crystalline. If you are finding that like the talc powder भलिया पूरा नरम अच्छी, that is amorphous. Then you will go for next is solubility. Solubility, whether it is soluble in water or not. So simple, we are taking most of the salts are soluble in water. We are not taking insoluble salt, we are taking soluble salt. Then we will follow some methods. So the first method is dry test tube heating. The question is asuchi, dry test tube heating, charcoal cavity test, soda lime test, cobalt nitrate test, flame test. Why these are necessary? ये जरूरत क्यों है? So these are generally giving you the preliminary idea. मतलब याकू जदि आमे यूज करी कि देखुचु एथरु हमको प्रिलिमिनरी गोटे ऑब्जर्वेशन आसी जिवो जों थरु आमे जानि परिबा सॉल्ट रे कैटायन कोन अछि एनायन कोन अछि. तो ड्राई टेस्ट ट्यूब हीटिंग, very simple method. We will do the practical after telling this. Dry test tube heating, you have to take a simple test tube, throw a pinch of salt you have to take, then heat it. On heating this, you will get some observations. Sometime you will get a sublimate. We will tell you what is sublimate. Other things. Then second process, you will go for heating in a charcoal cavity. I mean, charcoal cavity test. Then we will go for soda lime test. Soda lime means if volatile. Volatile meaning क्या है? What is the meaning of volatile? Volatile means the salt is directly converted from
solid to gas without going to his state, without going to liquid state. तामाने solid रू direct gas को पड़ेबो without liquid state को जाई करी, तो that is called volatile compound. Then cobalt nitrate test, then we'll go for flame test. Okay, so students, next we have to do one by one. We have to see how the practical is going on. Thank you. Then we have to see that one. Thank you. Okay students, so I told you we will discuss one by one. So first we will go for dry test tube heating of ammonium chloride. Separately ame kariba gote gote dekhiba. So ma'am is doing the ammonium chloride heating. मन रख हिट कला टिके टेस्ट ट्यूब बैंड करी रखिबो, सो दैट अदरवाइज कोन हबो वेपोराइज हे कि से पुणी पड़ी फाटी जीवो करन किछ असुविधा हिट करन से ऊपर सप्लीमेंट आसियो. तो यू सी whenever you are hitting this, gradually the salt get evaporated and get deposited. छाड़ दियंतु. So see, you can observe the bottom part and the top part. You see one white layer is coming, white layer is coming, that is called sublimate. So white sublimate is formed. तो जदि एमिति white sublimate आसिला, that means you think ammonium may be present. What is this? Ammonium may be present. Confirm hela pila? Okay, then I will go for the second one. Second one, कौन दिले मैम? Okay, we are hitting this. So this I have taken sodium chloride. Sodium तो ना. Students listen. If you will heat this, you will get a decrepitation. What is the meaning of decrepitation? Decrepitation no माने होची salt को जतले heat करिवो गोटे चरचर साउंड हम. सो साउंड मीन्स डेक्रिपिटेशन. तो डेक्रिपिटेशन रो माने होची जदि हेला, दैट मीन्स द सॉल्ट इज ए क्रिस्टलाइन सॉल्ट. क्रिस्टलाइन पिला बुझुचो? क्रिस्टलाइन माने दैट इज ए आयोनिक कंपाउंड, जेमिति सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट. तो ताकू जतले हम हिट कलु सी डेक्रिपिटेशन हेला. ओके, देन आई विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. आई एम टेकिंग स्ट्रोंशियम और बेरियम ना, या I am taking now strontium और बेरियम. तो मैं I am taking बेरियम क्लोराइड. तो बेरियम क्लोराइड को हिट कले कौन हम सी प्रथमे कौन हम गोटे टिके सॉल्टा वेपराइज हम, देन तले जो मास रही से मासटा गोटे इनफ्यूजिबल मास, माने सेटा मेल्टिंग हेनी. सो देखो तले गोटे जो मास आसीगला सॉल्टर मास, दैट इज ए इनफ्यूजिबल मास. तो जदि इनफ्यूजिबल मास आसिला, तो दैट मीन्स you are getting the chance of barium, मतलब barium may be present. मन रख एटा confirmatory नुह, एथिरे सबु आमर प्रेजेंस टा ही जना पड़िबो, लेड प्रेजेंस टा ही जना पड़िबो. तो आमे नेक्स्ट सॉल्ट नबा लेड क्लोराइड PbCl2. तो PbCl2 रे कोन हबो देखिबो तुमे, लेड क्लोराइड जतले तुमे हिट करिवो. So yellow when hot, white when cold. Yellow when hot, white when cold. So see, please, you can observe. I am taking lead nitrate. तो लेड नाइट्रेट यू कैन ऑब्जर्व टू थिंग्स. आमे करूनु एसिड रेडिकल करूनु, बट एसिड रेडिकल जदि हेई थांता, भाभी दियो जदि एसिड रेडिकल आमे करी थांते, तो सेटी गोटे कन्फर्मेटरी आसी थांता और इंडिकेशन आस्तांता. मु कहिबी. तो प्रथमे मु बेसिक्स पाई कहूची, बिकॉज तुम सिलेबस रे बेसिक्स अछि. तो जते बेले मु लेड नाइट्रेट को हिट करूची, तो वन व्हाट यू विल ऑब्जर्व, येलो व्हेन हॉट जते हिट करिवो सेही फ्लेम रे ही तुमे देखिवो से सॉल्टा तुमको टिके येलो देखा जीवो. देखो मु देखे दउची पिले, सी देखो येलो येलो आसिला. ताको जते आमे कोल्ड कर दबा, सेटा आसी गला कोन व्हाइट हे जिवो. टिके कोल्ड होला परे पुनी व्हाइट हे जिवो. व्हाइट हे गला. देखो
किंतु लेड नाइट्रेट नेले गोटे इंडिकेशन कौन आसो जदि तुम एसिड रेडिकल नहीं था तो इफ लेड नाइट्रेट नेले तुम ये जो ब्राउन फ्यूम्स आसुची दैट ब्राउन फ्यूम्स इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन ब्राउन फ्यूम्स इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन बट तुम नहीं छाड़ी दियो सिंपली आमे देखिलु कौन सॉल्ट व्हेन हिटेड जेतले हीट करागला तुम्हें पाइल कौन येलो व्हेन हॉट जेतले कोल्ड करदेलु आमको कौन मिलला वी गॉट व्हाइट कलर तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ व्हिच आयन लेड बुझिलो पिले